Hello and welcome. Discuss how environment, culture, and socioeconomic relationship play an important role in meeting the needs of disadvantaged children. Focus on three things: how environment, culture, and socio-economic relationship. Three variables are there. Play important role to meet the need of disadvantaged children. See, if you this question has been asked in civil service exams in 2022, and several students find it difficult to answer. I'm going to explain. See this thing. You need not to go in a very abstract way. Think of this thing. What are the need of the disadvantaged children? Question is this. Disadvantaged children means you think of example that people, for example, disadvantage comes in various forms. For example, organic disadvantage. Some people, some children doesn't have some handicap, so that will be called disadvantage. But here I am referring to socio-economic disadvantage like poverty, lower caste, maybe. So in general, take example of that person is coming from the condition of poverty. It is a big poverty is a big disadvantage. Now take this case study, and now think of example the children living in Dharavi, children living in in a village that is very poor. What kind of needs are there? Children have some common needs, developmental needs are there. Be it affluent needs, children or normal, they have their developmental needs. So and some special need because of the disadvantage. The condition of disadvantage will create some special need in the disadvantaged children. For example, suppose I am living in a conditions of disadvantage, I do not get nutritious food and all. My physical development will be stunted, and that require that become a special need. That, uh, for example, I'm going to give you that PEM, protein energy malnutrition, is very high in the group of disadvantage. वैसे बच्चे जो डिसएडवांटेज हैं उनमें प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन WHO का रिपोर्ट बताता है कि बहुत ज़्यादा है, एनीमिया के केसेस बहुत ज़्यादा है. ठीक है. Now come forward. This is the physical need, but apart from this thing, they live in the condition of scarcity. They do not find that mother is there to look after, because she need to go in another place to work. Then see this thing that Harry Harlow study, John Walby study. These studies said that there, that how much time mother gives and the kind of uh, attachment and bonding she develops, that influences the child sense of security and emotional security, that is affected also. So we can think of this thing. Apart from this thing, children have educational need also. Disadvantaged children living in Dharavi, see this thing, how what kind of educational facilities is there. So they are not in the mainstream. These are the few things you can highlight: the need of the disadvantage, some common need and some special need that arises because of the disadvantaged conditions. And you can think of, main variables. Now question is this, that how these three factors, that environment, culture, and socio-economic relationship, uh, play an important role in meeting the need of disadvantage. Now, here you need to give some examples to make your point, and then you highlight this thing. See, as far as environment is concerned, what kind of environment we are talking about? Physical environment, largely social environment. Physical and social environment. If environment is not that much conducive, children cannot, see, you find that you live in unhygienic conditions, problem of sanitation, problem of water. If we talk about social environment, if children are there but nobody is reading around, they see few children go to school, so they do not have that kind of environment. And second thing is culture. What do you mean by culture? What do you mean by culture? Environment have profound impact. I will emphasize that the kind of environment you have. Again, I am telling you before going to culture, the physical environment. Suppose you live in a polluted environment where the environment full of plastic bags, poly bags, and all. What kind of cool you have in your mind? And can you focus on a study on something? Can you see the cool relationship in family? So see the social environment also, peers, what they are doing,
you know, all these things, the social environment and physical environment both. And then culture means whether parents value something or not. Culture means values, culture means beliefs, culture means norms, largely abstract things. Apart from the cultural things that एजुकेशन का कल्चर है, अगर आप बात करते हैं इनमें पढ़ाने का कोई कल्चर नहीं। मैंने आपको एक पिछली वीडियो में बताया कि कई बार सोचते हैं हमें क्या बनना है, हमें तो एस्पायर ही करते हैं, कल्चर ही यही है कि लोग जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंट हो, अपना कमाना शुरू, कोई कोई पंचर बनाने में लग गया, कोई कुछ लग गया। सी दिस थिंग, दे आर दे ट्राई टू be independent somehow and to earn livelihood so that they could survive. Culture of survival cannot foster the culture of growth because that requires some patience and investment. Getting? And then socioeconomic relationship. Socioeconomic relationship means what? That how means how you relate in society. For example, will you be allowed to study in some school where affluent children from affluent family read? Take example, then you will study this thing, understand this thing. Sorry, Delhi government model, Sarkari school, so called. And what is this? Take this example: created an environment where physical sanitation is also there, everything hygiene is there. Okay. Second thing, culture. Culture means where education is valued. उनको बताया जाता है कि एजुकेशन से क्या फ़ायदा है, पेरेंट्स को बुलाया जाता है। आई एम टेकिंग एग्जाम्पल, So, see the thing culture. It is said that children are projection of their parents' aspiration. अगर बच्चे बड़ा सोच रहे हैं, पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। और अगर पेरेंट्स ही बहुत एस्पायरिंग नहीं है तो बच्चे भी बहुत एस्पायरिंग नहीं होते। रिसर्च इंडिकेट्स, वी हैव मैकमिलन रिसर्च ऑल्सो। एंड हमने अभी नील बटा सन्ना एक मूवी में के बारे में बताया कि क्या बनना है तुम्हें, तो बोले बाई बनना है क्योंकि मेरी माँ भी वही बाई है। दिस काइंड ऑफ थिंग्स आई एम टॉकिंग अबाउट। डिसएडवांटेज चिल्ड्रेन think of in that way. So see the culture. If parents start valuing education की वैल्यू होती है, करना शुरू कर दिया या कम्युनिटी, तो उनमें भी ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। तो एक इन्वायरमेंट और एक उसका कल्चर की एजुकेशन का कल्चर है, पढ़ने लिखने का कल्चर है इन सोसाइटी में वो। और फाइनली दैट इक्वालिटी। अगर अब ये हो कि डिसएडवांटेज में ही रहना है हमें, तो एक सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन होता है। अगर उनके दैट इज़ नॉट होप होने से ही इंसान जो है ड्रीम करता है। अगर बाहर होप दिखता हो कि इक्वालिटी है, पॉसिबल है, तभी तो ड्रीम करेगा। ये रिसर्च बताती है दैट दिस वन। तो सोशियो इकोनॉमिक रिलेशनशिप मीन्स दैट टू हुम यू कैन रिलेट, किसके साथ आप खा सकते, किसके साथ बैठ सकते, किसके साथ खेल सकते। ये इफ़ यू आर कैपेबल टू डू दिस थिंग, जैसे कह सकते दिल्ली स्कूल के में कि भाई आप इसके साथ नहीं बैठ सकते, ये कर सकते, नहीं कर सकते, तो ये आपने डेमोक्रेटिकली किया है। लेकिन ये सोसाइटी में पॉसिबल भी हो। आज अगर आप देखिए, अगर तीन चीज़ें अगर ऐसा है तो वो डिसएडवांटेज चिल्ड्रन के जो उसका नीड है, जिसका स्पेशल नीड है, उसको भी कैटर करता है, क्योंकि वो थोड़े से डिप्राइव, अंडर डेवलप्ड, थोड़े से सस्पिशियस एटीट्यूड, थोड़ा वैसा कि नहीं हो सकता, एस्पायरिंग नहीं होते और इमोशनली इनसिक्योर हो सकते हैं। रिसर्च बताती है कि उनके अंदर थोड़े न्यूरोटिसिज्म भी आ जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट में नहीं रहते और अनसर्टेनिटी से ज़्यादा झूलते हैं। दे सो वी हैव रिसर्च फाइंडिंग दैट इंडिकेट दैट दे आर हाई इन इम्पल्सिविटी एंड दे शो हाई डिग्री ऑफ न्यूरोटिसिज्म। इमोशनली वो थोड़े से रिएक्टिव हो जाते हैं, हर चीज़ को इमोशनली रिएक्ट करते हैं। So see the culture of poverty. I am talking about that. So how these three variables create an ecosystem. I am talking about from the perspective of ecology. How it create an ecosystem to fulfill the need of the disadvantaged learner or disadvantaged children in particular and learner in particular disadvantaged children in general. हम केवल लर्नर के रूप में उसे नहीं देख रहे हैं, उसके कई नीड है। तो चिल्ड्रन है तो इसके एक लर्निंग नीड भी होगा, डेवलपमेंटल नीड में ना। डेवलपमेंटल नीड का मतलब है कि उसको फिजिकली भी डेवलप होना है, सोशली भी डेवलप होना है, कॉग्निटिवली भी, इमोशनली भी होना है डेवलप, है ना, मोरली भी देना। तो बहुत सारे डेवलपमेंटल नीड, इनमें इन तीनों को लेकर चले, इन्वायरमेंट, कल्चर एंड दिस वन। दिस थ्री फैक्टर क्रिएट ए इकोलॉजी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन।
children in general. So if these three factors are robust, supportive, then children will develop. अब हमने बहुत सारे रिसर्च फाइंडिंग्स साइट किए हैं कि भाई पर्सनालिटी कोरिलेट्स क्या होते हैं, है ना, कि ऐसे बच्चे, अभी मैंने बताया न्यूरोटिसिज्म हाई होता है, डी एन सिन्हा की भी स्टडी है, उदय पारी की स्टडी के एस्पायरिंग ज़्यादा नहीं होते, है ना, दे आर लो इन अचीवमेंट मोटिवेशन, लो इन एक्सटेंशन मोटिवेशन, and high on dependence. These kind of things are there. This is a pattern. So this is the need. Now how to stimulate achievement, how to stimulate extension. Getting कि अपने को हेल्प की जहाँ ज़रूरत हो मांगे, तो इस तरीके से चीज़ों को फ्रेम करके आप आंसर को डेवलप कर सकते हैं, रेदर देन कि आप एक कोशिश करो कि इसको कभी हमने पहले पढ़ा है क्या. इट कुड बी फ्रेम्ड इन मेनी वेज. This question, the basic variables you have, you are aware, and read the question, try to go in a step by manner and try to interrelate the things. You will be able to come up with a good answer. Getting? I hope I made this point. I expect that your basic knowledge of disadvantage and deprivation, like what is disadvantage, what is deprivation, what are the physical consequences of disadvantage, what is the psychological consequences of disadvantage, ये सब आपका clear होगा, then you will be able to understand what I am telling you in this answer. So मिलेंगे अगले वीडियो में और बात करेंगे अगले क्वेश्चंस पे. थैंक यू.